হুজাই লংকাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাই প্ৰফাইল মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকি উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ সিং, বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া, 91 নং হুজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আৰু 92 নং লামডিং সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শিবু মিশ্ৰৰ লগতে বিজেপি অন্যান্য সদস্যসকল। 91 নং হুজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আৰু 92 নং লামডিং সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শিবু মিশ্ৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাই প্ৰফাইল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লংকা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰৰ মঞ্চত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে ভঙা ভঙা অসমীয়াতে ৰাইজক সম্বোধন কৰাৰ লগতে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই ভাষণ আৰম্ভ কৰে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক স্মৰণ কৰে। তেখেতে ভাষণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাম কাজৰ প্ৰশংসা কৰে। লগতে তেখেতে কয় যে মোদী চৰকাৰৰ নিচিনা শক্তিশালী চৰকাৰৰ বাবে পাকিস্তানক সাৰ্জিকেল এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিবলৈ সফল হৈছে। তেখেতে লগতে কয় যে কোভিড-19 সময়কালত মোদী চৰকাৰে কৰা কামৰ আমেৰিকা বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জৰ্জ বাইডেনে শলাগিছে। আনহাতে ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ নীতি বিকাশৰ নীতি নহয় বুলি অভিহিত কৰি বিজেপি তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবেহে অসমৰ তথা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নতি হৈছে বুলি মত ব্যক্ত কৰে। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অসমবাসীয়ে যি সহযোগ আগবঢ়াইছে সেই ক্ষেত্ৰতো প্ৰশংসা কৰে হাই প্ৰফাইল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ब्रह्मपुत्र और इसके तट के लोगों के महामिलन का तीर्थ है असम, और इसलिए असम की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि धरती शंकर देव की भी धरती है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परम पुरोधाओं में से शंकर देव रहे हैं। शंकर देव के कारण ये धरती बच पाई थी, अन्यथा कांग्रेस की अगर कूटनीति चलती और कांग्रेस का षड्यंत्र सफल होता तो यह धरती भी उसी प्रकार से भारत के लिए खतरा पैदा कर देती, जैसे घुसपैठियों ने बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस की तुष्टीकरण के नाते आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। लेकिन मैं उस महापुरुष को आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रवाद की अलग जगा करके उस कालखंड में इस धरती को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया था। शंकर देव के श्रीमान शंकर देव की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उस महापुरुष के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, श्रीमान शंकर देव ने हमें घुसपैठ की समस्या के प्रति सचेत किया था, और इसीलिए कांग्रेस शंकर देव को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस की नीति विकास नहीं, कांग्रेस की नीति समृद्धि नहीं, कांग्रेस की नीति आप सबकी खुशहाली कभी नहीं रही, उसकी नीति तुष्टीकरण की नीति थी, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करने की नीति थी, और उसकी कीमत एक लंबे समय तक असम वासियों को चुकानी पड़ी थी, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका। ये सुरक्षा देने का कार्य भी बहन और बेटियों को किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, अगर दुश्मन देश भारत के अंदर घुसपैठ करके भारत के अंदर किसी प्रकार की कोई गुस्ताखी करेगा तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के बहादुर जवानों ने करके दिखाया है। सरकार तो ऐसी ही चाहिए, जो विकास भी करा सके, समृद्धि भी ला सके, नौजवानों के लिए रोजगार भी दे सके, हमारी माताओं बहनों की गरिमा का ख्याल भी रख सके, और साथ साथ सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के साथ ही
भारत को परम वैभव तक पहुंचा। जय जय श्री राम। सरदे राइस सरदे आई हकल बाई हकल सरदे देवता हकल भाई हकल मोर हेवा ग्रहण करीबो और लोगों ते आगंतुक रोगाली बिहुर ओनो ग्रहण करीबो। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय सांसद श्री दिलीप सेकिया जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान अनूप देव जी, होजाई विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान रामकृष्ण घोष जी, लालडेंग विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री शिबू मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री उत्तम दास जी, समीर चक्रवर्ती जी, अर्जुन मजुमदार जी, सुशील दत्त जी, रमाबाला देवी जी, मंडल के सभी अध्यक्षगण और भारी संख्या में उपस्थित होजाई विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, मैं रामकृष्ण की धरती से आपकी इस पावन धरती पर उपस्थित हुआ हूं। সজাবেছে ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে ইমান সঁহাৰি জনাই সভাত আহিছে আৰু আমি গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিচিনা ব্যক্তিত্ব ভাৰতৰে নহয় গোটেই বিশ্বত তেখেতে মানে এটা সন্মানজনক ব্যক্তিত্ব তেখেতে আহিছে। যোগী আদিত্যনাথজীয়ে আহি আমাৰ যিটো সন্মানিত কৰিলে তাৰ কাৰণে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ আহিছে অহাৰ সময়ত হোজাই ৰাইজৰ কি সঁহাৰি আছে, অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আছে আৰু প্ৰতিটা কথাত তেখেতসকলে সমৰ্থন জনাই আছে। আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই আজি ক'ব পাৰোঁ যে আগতে আমি 1,05,000 ভোটৰ সৰ্বাধিক ভোটত জিকিছিলোঁ হোজাই। এইবাৰ আমি 1,72,000 ভোটত জিকি যিটো বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানে ছাৰ্ভে এজেঞ্চিবিলাকো আমাক কোৱা আৰম্ভ কৰিছে। তাৰ মূল কাৰণ হ'ল কি চাওক, কংগ্ৰেছৰ আজি অস্তিত্ব নাই। কংগ্ৰেছৰ যিমান কাৰ্যকৰ্তাসকল আছিলে তেখেতসকলে আগৰ 5 বছৰ আগত 5,000 ভোট পায়, 35,000 ভোট পাইছিলে। এই 35,000 ভোট বিজেপিত আহি যাব। আৰু ইফালে মই দেখিছোঁ এনেধৰণৰ এজন প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে যিটো প্ৰাৰ্থী দিছে এইটো মোৰ কথা নহয়। তেখেতসকলে কৈছে এনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে UDFৰ ভোটাৰখিনিও বোলে বিজেপিক ভোট দিব। তেতিয়াহ'লে আমি দেখিলোঁ যে 2 লাখতকৈ বেছি ভোট পাই যাম। তো যি নহওক, যদি ভোটখিনি আহে ভাল হ'ব। এইটো উন্নয়নৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে হ'ব। উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি যিখিনি কাজ কৰিম তাৰ প্ৰতি স্বীকৃতি।